आंसर बताओ। 288 आ जाएगा। देखो आप लोगों ने कितने यूनिट्स बनाए, 120, प्लीज 115 मत लेना। 115 यूनिट्स ने क्वालिटी टेस्ट पास किया, वो क्वालिटी रेशो के अंदर आ जाएगा, जो 5 यूनिट्स अपने जो डिफेक्टिव थे। बाकी जो है इन दिस पर्टिकुलर केस 120 यूनिट्स पर शिफ्ट है ना, इंटू 2 शिफ्ट्स, ये हो गया एक दिन की कहानी, इंटू 6 डेज इंटू 4 वीक्स, तो इतना यूनिट्स बना। हर यूनिट के लिए स्टैंडर्ड टाइम कितने का लगना चाहिए था, 3 मिनट्स डिवाइडेड बाय 60, 288 आवर्स आना चाहिए। चलो आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट रेडी टू कैलकुलेट ऑल द रेशियोज एंड एवरीथिंग। तो अभी जरा लिखना कैलकुलेशन ऑफ ratios and OEE. First, availability ratio. Hours work divided by planned production time into 100. So this will be 291 divided by 316 into 100. 92.09%. Standard 90%. So obviously this ratio is satisfactory. Second, performance ratio. Standard hours for actual output divided by actual hours worked into 100 भी आएगा बेटा। ये 288 था, 291 था, into 100, 98.97%. Standard 95%. उसके बाद सॉरी लास्ट वाला क्वालिटी रेशो। Units that pass the test divided by units produced. You can be writing good units upon gross units also, that's okay. Into 100. 115 divided by 120 into 100. 95.833%.
this ratio is below the standard. सुनो अभी ना इसके बाद अगर सपोज लाइक क्योंकि वाई से इतना ज्यादा डिटेल कमेंट्स वगैरह वो नहीं करता, लेकिन अगर मेरे को आगे कुछ वो पूछा होता ना अपना कुछ सजेशंस वगैरह दो, तो ऑनेस्टली यहां पर और यहां पर सजेशन मत दो बेटा. द रेशियो इज सेटिस्फैक्ट्री, आप उन लोगों ने वो लिखी दी है. क्वालिटी रेशियो इज बैड. इट कुड बी दैट सम पार्ट ऑफ द मशीन इज नॉट प्रॉपर, ड्यू टू विच the quality of the product is suffering. Company should introspect, call the technical people to find out that what is the fault in the machine and replace that part. तुमको समझा जो मैं बोला? ये नहीं हो रहा कि मशीन की वजह से वर्कर का एफिशिएंसी अफेक्ट हो रहा है. तो मशीन चल तो बराबर रहा है क्योंकि अपना पिछला वाला जो रेशो है वो तो बराबर है, लेकिन मशीन चल रहा है तो गुड्स बना रहा है, तो गुड्स बराबर से नहीं बने. ये नहीं है कि मशीन स्लो चल रहा है. तुमको समझा जो मैं बोला? क्योंकि अगर मशीन स्लो चलता, मेरे को आगे जरा बोलो, तो अपना जो एफिशिएंसी रेशो या फिर जो परफॉर्मेंस रेशो होता है वो 95% से कम आता, लेकिन वो वाला रेशो तो ठीक है. तो यहां पे क्वालिटी प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन इज अ प्रॉब्लम एज सच. ओके, सो इन रियलिटी कंपनी विल स्टार्ट टू बी थिंकिंग इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन. कुछ ना कुछ शायद पार्ट फॉल्टी होएगा मशीन का, जिसकी वजह से प्रोडक्ट का क्वालिटी जो है वो बेकार आ रहा है. सो दे शुड कॉल द टेक्निकल हेल्प अप इन सो ऑन. अगर खुद तुम्हारी कंपनी के ना उतने एक्सपर्ट्स हैं हु कैन ट्राई टू डिटेक्ट द प्रॉब्लम, ट्राई टू बी डूइंग इट. ओके, वरना यू कॉल द एक्सपर्ट्स. ओके, जिन लोगों ने मशीन सप्लाई की है आप उन लोग को कॉल करो, बट ट्राई टू फाइंड आउट दैट रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम. ठीक है, यहां पे ना अभी फिर से यू कैन राइट डाउन दोज वो सिंबल्स यार. तो यहां पे लिख देना ए, यहां पे लिख देना पी, यहां पे लिख देना क्यू. और अभी ओ ई ई तुम लोग अगर ऐसा शॉर्ट फॉर्म एग्जाम्स के अंदर भी यूज करोगे तो भी वो चलेगा बेटा. ए इंटू पी इंटू क्यू, तो दिस इज 92.09% इंटू 98.97% इंटू 95.83%. $85.66 आता है क्या? एक बार चेक कर लेना प्लीज. 87.34 आ रहा है. एक मिनट. 0.9209 इंटू 0.9897 इंटू 0.9583, 87.34. 87.34%. The standard was 85%. This ratio meets the, ऐसे लिखना, वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड, बस, of 85%. चलो सुन, एक काम जरा करो ना, यहां पे यू नोट अबाउट क्वालिटी यू ऑल कैन राइट डाउन. सजेशन नॉट आस्क, लेकिन ठीक है, मेरे को लगता है कि एग्जाम्स के अंदर ऐसा वो लोग पूछ भी सकता है. सजेशन टू इम्प्रूव quality ratio. It could be that
some part of the machine is faulty and due to that quality of the product is suffering. Company should call the experts to detect that faulty part. So can you read out? क्या यार इतना बुरा राइटिंग भी नहीं है. इट कुड बी दैट सम पार्ट ऑफ द मशीन इज फॉल्टी and due to that quality of the product is suffering. Company should call the experts to detect that faulty part. हो गया बेटा. चलो सुनो मेरी बात. क्वेश्चन नंबर 3, 4 and 5 we are finishing it off at a fast speed. I know that the two of them are supposed to be done for homework, but then they are quite easy. We'll finish it off. सुनो, अभी फॉर्मूला नहीं लिखेगा तो चल जाएगा सबको. You will always say yes only. तो मैंने पूछा क्यों? I'm sorry. Question number 3. SSK Pharmaceuticals is producing medication products, pills, balms, etc. and can be called high volume based production environment. There are several different automated production machines located in the plant through which the production of medicines is accomplished and fulfill the demand. Plant operates in double shift a day, each consisting of 8 hours with 30 minutes of lunch break and tea break of 15 minutes. Following data pertains to the machine X78. X78 14th of Feb 2019. बहुत पुरानी बात हो गई. Wednesday. ठीक है. Breakdown, repair and startup time 68 minutes. Now usually breakdown मतलब will be breakdown mean कि breakdown वगैरह हुआ तो ये अपने को उसके बाद रिपेयरिंग वगैरह हुआ और फिर से मशीन को स्टार्ट वगैरह किया. ठीक है. अभी ऑब्वियसली ये वाला चीज जो है ये मतलब अपने को बाद में पता वो चलने वाला है. ठीक है. आगे स्टैंडर्ड साइकिल टाइम 2.5 मिनट्स पर टैबलेट. ठीक है. क्वालिटी लॉस ड्यू टू स्क्रैप, रीवर्क एंड रिजेक्शन 50 टैबलेट्स. टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस 280 टैबलेट्स. कमेंट ऑन OEE. अभी आंसर तुम्हारे पास है, वो देख लेंगे कि आंसर जो है वो बराबर आता है कि नहीं. ठीक है. तो लेट अस स्टार्ट इन दिस केस. अभी डायरेक्टली आई एम गोइंग टू बी कंप्यूटिंग द थिंग्स फटाफट. ओके, विदाउट राइटिंग द फॉर्मूलाज एज सच. ओके, तो लिखो जरा प्लीज. फर्स्ट अवेलेबिलिटी रेशियो. अच्छा, मैं क्या बोलता हूं, लेट्स कंप्यूट एवरीथिंग फॉर 1 डे. नो, दैट बी बेटर. वैसे भी ये वाला डेटा एक डे का ये, लेकिन एक डे के ना बेटा 2-2 शिफ्ट्स हैं, वो जरा वो याद रखना. तो कहने से दिन के देयर विल बी 16 आवर्स. नो, ठीक है. तो यहां पे लिखना 16. तुमको मिनट्स के अंदर कंप्यूट करने का है बेटा मेरे को, वो भी चलेगा. ठीक है. अच्छा, उन लोगों ने क्या लिखा है कि ना दिन का डबल शिफ्ट होएगा ऑफ 8 आवर्स, बोले तो 16 विद 30 मिनट्स ऑफ लंच ब्रेक एंड टी ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स. तो कैन यू से इल बी 45 मिनट्स पर शिफ्ट. मतलब इन दिस केस इल बी 1.5 आवर. नो, इन 16 आवर्स. ओके, सो देयरफॉर यहां पे आई एम राइटिंग
45 मिनट्स इंटू 2 डिवाइडेड बाई 60, तो ये तो अपने को डायरेक्टली लेस करना पड़ेगा। मैं क्या बोलता हूं, एक काम जरा करें क्या, मिनट्स के अंदर वो करें क्या, विल बी बेटर फॉर मी यार। हाँ, क्योंकि ना ये वाला भी जो टाइम है ना, ये 68 वो मिनट्स दिया हुआ है, ठीक है, तो मिनट्स के अंदर ही करता हूं, तो यहां पे यू कैन राइट डाउन इनटू 60। चलो ठीक है फिर, दैट्स ओके, ठीक है। अच्छा, अभी क्या करना, पहले जो डिनोमिनेटर है ना, एक बार जरा वो कंप्यूट कर ले बेटा। तो 16 आवर्स माइनस 1.5 आवर्स, सो 14.5 आवर्स इंटू 60 मिनट्स, तो 870 मिनट्स आर अवेलेबल। अच्छा, मेरे को जरा बोलो, लेकिन 870 के अंदर से कहने से ये वाला डेटा पूरे के पूरे दिन का ही है ना बेटा, तो 870 के अंदर से कितना मिनट्स आर गॉन, 68 मिनट्स आर गॉन, ठीक है। सो देयरफॉर इन दिस पर्टिकुलर केस दिस विल बी 870 माइनस 68, वही लेस करने का था ना अपने को। एक 870 बराबर कितना आता है परसेंटेज, 92.18। स्टैंडर्ड लिखो 90%, आगे लिख देना दिस रेशियो इज सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, उसके बाद अवेलेबिलिटी रेशियो, उसके बाद परफॉर्मेंस रेशियो, अच्छा बेटा 280 एक मिनट, तो न्यूमरेटर के अंदर क्या आता है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट ना, 280 टैबलेट्स बनाया, हर टैबलेट के लिए कितना टाइम वो लगना चाहिए, 2.5 ना, डिवाइडेड बाय कितना टाइम लग गया, 802 मिनट्स। सेवन 700 डिवाइडेड बाय 802 इंटू 100, 87.28%। स्टैंडर्ड 95%। This ratio is far below the standard. It means that poor maintenance of the machines is decreasing the efficiency. क्वालिटी रेशियो सुनो, कितना यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ बेटा, 280, उसके वजह से क्वालिटी लॉस ड्यू टू स्क्रैप, रीवर्क एंड रिजेक्शन, दैट इज वो 50। तो कहने से जो गुड यूनिट्स क्वालिटी टेस्ट पास हुआ, दोज विल बी 230, नो? ओके, सो देयरफॉर 230 अपॉन 280, $99 sir. 99%।
Sir, what is it after due to? ड्यू टू मशीन्स, एक मिनट, ड्यू टू पुअर मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स होना चाहिए, सॉरी, ड्यू टू पुअर मेंटेनेंस ऑफ मशीन, या फिर ड्यू टू मशीन्स ऑल्सो, वो ठीक है, चलो ड्यू टू पुअर मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स, तो ऐसा लिख दो, ड्यू टू पुअर मेंटेनेंस ऑफ machines, quality of the product produced is far below the standard. सिक्सटी सिक्स आता है क्या कुछ? ठीक है, हाँ, अपने बुक के अंदर आंसर वो बदल देना. सो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग आल्सो, कि आईसी ने पहले ना वो अवेलेबिलिटी रेशियो वो लोग अलग, वो गलत तरीके से तो वो डिफाइन करते थे. नाउ दोस गाइज हैव रेक्टिफाइड, सो देयरफॉर दिस इज द करेक्ट आंसर. Standard is 85%. This ratio is far below standard, which is mainly due to poor availability, नहीं, poor, एक मिनट, पुअर कौन सा रेशियो था बेटा? पुअर परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी. Company should take steps to find out the reasons and bring it to the standard. ये कर लो, मेरे को बता दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. क्वेश्चन 4 हिंदुस्तान लिमिटेड वाला ना, चलो. अच्छा, हिंदुस्तान लिमिटेड सप्लाइज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू वाइटल इक्विपमेंट used in production activity for April 2022. Time worked during the month 210 hours. ये क्वेश्चन ना out of all the questions is the easiest of all. Okay. Total production during the month 2800. Number of units accepted out of the total production 2520. Standard time for actual production 180 hours. Time lost during the month will be 28. Obviously time lost will be, I think, time lost due to the machine का breakdown वगैरह, ये वो सब कुछ. ठीक है, आगे अभी ध्यान से सुनना मेरी बात. State an appropriate approach to measure total productive performance of the equipment. तुम लोग को ना यहाँ पर लिखना पड़ेगा. If we want to measure how is our maintenance program doing, we have to compute
in this case overall equipment effectiveness. You will have to try to discuss all those things that I discussed. वो ना तुम्हारी बुक के अंदर यहां पर मैंने शुरू के अंदर सब कुछ ये प्रिंट किया हुआ है, ठीक है, OEE के बारे में. तो यहां पे ना आप लोग क्या करो, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, you all can write down. This is answer to question number 4 part 1. अच्छा, तो यहां पर भी लिख ही देना, सी पेज 20.1. आगे, क्वांटिफाई द टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस परफॉर्मेंस ऑफ द अबव मेंटेन्ड इक्विपमेंट बाय यूजिंग द अप्रोच स्टेटेड इन वन अबव. तो यहां पे आपको OEE जो है बेटा कंप्यूट करना पड़ेगा, ठीक है, वो हम लोग कंप्यूट कर लेते हैं. And comment on the effectiveness of the maintenance department. Okay, फटाफट let's try to be doing this. Okay, this is question number 4 part 2. I am writing directly A now. ठीक है, अभी ना इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली एवरीथिंग इज गिवन. एक बार सम पढ़ लो, मेरे को बोल देना अवेलेबिलिटी रेशियो विल बी व्हाट अपॉन व्हाट. सोच के, अपने पास अक्ल है फिर भी टाइम भी है, सोच के मेरे को जरा बोलना. 210 अपॉन 23. देखो इतने आवर्स काम किया है, इतने आवर्स लूज अपना हो गया. सो प्लान प्रोडक्शन टाइम विल बी 210 अपॉन 210 प्लस 28. डज एवरीबडी एग्री टू दिस? ओके, तो यहां पे आप लोग ऐसे ही लिखना 210 अपॉन 210 प्लस 28. 88.24%. उसके बाद परफॉर्मेंस रेशो बेटा डायरेक्टली है अपने पास. कितना आवर्स लगना चाहिए था? 180. कितना आवर्स लग गया? 210 इंटू 100 लिखने का है तो लिख देना बेटा 85.71. क्वालिटी 2520 डिवाइडेड बाय 2820 90%. पार्ट थर्ड, एक नहीं, OEE अपने को कंप्यूट करने का, उसकी तो वाट लगी हुई. 68.06%. टाइप करेगा फर्स्ट टाइम फॉर टुडे. कई लोगों को मेरी हैंडराइटिंग के साथ तो दिक्कत है. यार क्या होता है 0.8824 इंटू 85.71% इंटू 90%. 68.09. ये बराबर है ना? हाँ ठीक है बेटा, ठीक है.
ये पार्ट थर्ड का आंसर है, वेयर बाय वी आर कमेंटिंग। अच्छा देखो, तुमको एक चीज बोलता हूं, आईसी ने भी कभी कमेंट्स के अंदर नहीं लिखा, लेकिन मेरे को लगता है वो चीज लिखना भी चाहिए। अगर अपना कभी क्वालिटी रेशो पुअर है, कैन वी से इवन आर टीक्यूएम वाला जो प्रोग्राम है विल गेट अफेक्टेड, नो? क्योंकि क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स जो बन रहा है वो अच्छा नहीं बन रहा बेटा, वो वाला जो रेशो है वो सिर्फ 90% है। सो देयरफॉर ड्यू टू दिस इवन द टीक्यूएम प्रोग्राम विल बी सफरिंग। ओके, सो दैट लाइन एटलीस्ट आई ट्राई टू गिव यू ओवर हियर। बाद में चलो सुनो, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज एक्चुअली ऑलमोस्ट सिमिलर टू योर क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक दैट वी ऑल हैव डन, ऑलमोस्ट वैसा ही है। ओके, लेट्स डू इट। APZ company manufactures spare parts that can be called as high volume based manufacturing environment। वही लाइन है बेटा। The company is using a system of TPM for maintaining and improving the integrity of manufacturing process. There are several different automated manufacturing machines located in the plant through which the manufacturing of spare parts is done and supplied to cater to the demand in the market। ठीक है। A 12-hour shift is scheduled to produce a spare part in APZ Limited as shown below. The shift has 3 15 minutes break and 10 minutes cleanup period। चलो ठीक है, ये 12-hour shift है, 12-hour shift, ओके, is scheduled to produce a spare part in APZ। तो एक ही शिफ्ट होता है लेकिन 12 घंटे का, ठीक है। आगे प्रोडक्शन शेड्यूल फॉर ऑटोमेटेड मशीन A10, ठीक है। साइकिल इज 10 सेकेंड्स। साइकिल मतलब साइकिल टाइम मतलब स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट, ठीक है, वो 10 सेकेंड्स है। अगर चाहो तो आगे वो लिख सकते हो, स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट। आगे स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चर 3360, ठीक है, उसके ऐसे स्क्रैप 75 था।
unplanned downtime, that is 36 minutes. Calculate OEE and comment on it. I think we'll start away with that particular part. उसके बाद आगे बात वो कर ही लेंगे, ठीक है? सुनो, अच्छा मेरे को जरा बोलो यहां पर 12 आवर शिफ्ट के अंदर से वो डिनोमिनेटर के लिए मेरे को बोलो कुछ लेस होएगा कि नहीं लेस होएगा, बस मेरे को उतना बोल देना। होएगा। कैन वी से ये जो 3-15 मिनट्स की ब्रेक है वो लेस होगा एंड 10 मिनट्स का क्लीन अप पीरियड भी लेस होगा, क्योंकि ऑब्वियसली दीज पर्टिकुलर थिंग्स दिस टाइम विल नॉट बी अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन। आप लोग जो भी कर लो यार, ठीक है? तो ये चीज तो अपने को लेस करने का है। बाकी एक और चीज न्यूमरेटर के लिए लेस हो जाएगा, मेरे को बोलो क्या? अनप्लान्ड डाउन टाइम। तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर तक पहुंचने के लिए आप लोग वही वाला टाइम लेस करते हो ना जो पुअर मेंटेनेंस की वजह से लेस वगैरह होता है। ओके, तो राइट डाउन प्लीज, लिखो पार्ट 1 अवेलेबिलिटी रेशियो इज इक्वल टू, मैं मिनट्स के अंदर ही अभी वो कर रहा है यार, मेरे को अक्ल वो आ गई वो पिछला करके, 12 × 60, इसके अंदर से एक 45 मिनट्स का ब्रेक जाएगा और एक यहां पे क्लीनिंग टाइम भी जाएगा 10 मिनट्स का। एक बार जरा पहले डिनोमिनेटर का आंसर अलग से निकालना। कितना आता है बेटा? 665 ना, ठीक है। लेकिन 665 अपने पास टाइम अवेलेबल होगा, हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन बीच में क्या हो गया, अनप्लान्ड डाउन टाइम था 36 मिनट्स का। सो 665 - 36, आगे 69 सर। 59 परफॉर्मेंस रेशियो। परफॉर्मेंस रेशियो तो बेटा हर यूनिट के लिए टाइम अपने को कितना लगना चाहिए था, 10 सेकेंड्स। अभी मिनट्स के अंदर कन्वर्ट वो कर ही लेंगे। कितना यूनिट्स बनाया बेटा? 3360 हर के लिए 10 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 60 कर लेता है तो मिनट्स के अंदर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 629 मिनट्स इंटू 100। सो 33,600 डिवाइडेड बाय 60, 560 मिनट्स लगना चाहिए था, 629 मिनट्स लग गया, 89.03% क्वालिटी। अच्छा 3360 के अंदर से कितना स्क्रैप यूनिट्स हुआ? 75। तो 3360 - 75, 3285। ये 82.33 के आसपास आता है। ठीक, अभी इट इज नॉट वेरी क्लोज टू 85,
but it is not very far away also. So therefore we'll try to be using those particular words, although we will give the credit for having the first ratio being met. Okay, but then the other two ratios are bad, due to which OEE is not doing that good. Okay, तो यहाँ पे अपने को वैसा ही कमेंट जो है तो वो डालना पड़ेगा. लिखो overall OEE is not very far away from the world standard of 85%. Company should improve its performance of maintenance, especially as far as efficiency and quality go. It should find exact reasons why the efficiency ratio is far below standard of 85%, sorry, of 95%. It could be due to poor maintenance that machines are not efficient. Moreover, even the quality ratio is slightly lower than standard set at 99%. Overall, company should take steps by rectifying its faults and maintenance and bring OEE to 85%. ये लिख लो, मेरे को बता देना, फिर उसके बाद एक लास्ट पार्टी बस मेरा बाकी रहेगा. हो जाए मेरे को बता देना प्लीज. चलो सुनो, लास्ट पार्ट. Management of the company has decided to ensure that things are done right the first time and that defects and waste are eliminated from the operations.
They are planning to implement TQM also. Summarize the connection between TQM and TPM. Now, first of all, you should be saying this particular thing, that TQM concentrates on what, TPM concentrates on what, and TPM in short is a small part of TQM. पहले उतना वो लिखते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं. ओके, उन लोगों ने बस वही बोला है, समराइज द कनेक्शन बिटवीन देम. अभी वो लोग एक जनरल चीज बात कर रहे हैं कि दोनों के बीच में तो कनेक्शन क्या है. ओके, लिखो जरा प्लीज, दिस इज पार्ट 2. राइट डाउन. Write down. TQM and TPM are both techniques to improve quality, although TQM concentrates on quality of the products and TPM on the maintenance of the machines which produce those products. TPM can be said to be part of TQM. Connection between them can be highlighted by following points. इतना लिख लो पहले. देखो, लिखा बेटा? देखो, वन थिंग, इफ यू विल सी योर लास्ट चैप्टर इन दिस चैप्टर ना, दोनों केसेस के अंदर लॉन्ग रन के अंदर अल्टीमेटली अपना कॉस्ट कम होएगा. टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ यू विल मेंटेन द मशीन्स इन अ प्रॉपर वे, तो ब्रेकडाउन्स वगैरह जो है वो नहीं होगा, तो तुम्हारा ब्रेकडाउन मेंटेनेंस वाला कॉस्ट बच जाएगा. TQM का बात करूं तो कैन वी से इफ यू विल स्पेंड मोर ऑन अप्रेजल कॉस्ट एंड प्रिवेंशन कॉस्ट, तुम्हारा इंटरनल एंड एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट कम होता है. सो देयर ऑल्सो अल्टीमेटली वी ट्राई टू रिड्यूस आवर कॉस्ट. येस, देयर वी गेट एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ हायर सेल्स वगैरह, बट अल्टीमेटली बोथ ऑफ देम डू से दैट कि देयर विल बी रिडक्शन इन कॉस्ट फॉर श्योर. यहाँ पे इट विल बी रिडक्शन इन द फेलियर कॉस्ट इन केस ऑफ द TQM, एंड यहाँ पे देयर विल बी रिडक्शन इन द मेंटेनेंस कॉस्ट. ओके बोलते सर मेंटेनेंस कॉस्ट तो बढ़ेगा ना? नहीं, क्योंकि अगर हम लोग मशीन्स को मेंटेन नहीं करते थे, अपना कौन सा कॉस्ट वो ज्यादा होता, मेरे को बोलो? तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस. लेकिन अभी अपना प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का कॉस्ट तो वो ज्यादा होगा. लॉन्ग रन के अंदर ना इट विल ऑलवेज बी बेटर टू हैव प्रिवेंटिव मेंटेनेंस. शायद उसका कॉस्ट विल ऑलवेज बी लोअर देन दैट. ओके, क्योंकि चीजें खराब ही नहीं होंगी. ओके, उसके लिए यू आर ट्राइंग टू बी मेंटेनिंग. सो देयरफॉर दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ अ सिमिलैरिटी तो बिटवीन देम. सो बोथ आर कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक्स while TQM aims to reduce cost of poor quality, TPM aims to reduce maintenance costs. Second, सुनो, both of them know are always long run philosophies. इतनी जल्दी रिजल्ट किसी चीज से भी नहीं दिखाई देगा बेटा. आज फॉलो करेगा, शायद 2 या 3 साल के बाद अपने को यहां पे इफेक्ट दिखाई देंगे. तो यहां पे लिख सकते हो बोथ आर लॉन्ग टर्म फिलोसफीज which give result over a period of time and not immediately.
थर्ड, अभी ये चीज मैंने शुरू में बोल दिया था, वील राइट इट नाउ. दोनों के अंदर ना यू रिक्वायर गुड अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग टू बी गिवन टू द वर्कर्स. वर्कर्स हैव टू बी मेड क्वालिटी कॉन्शियस कि भाई प्रोडक्ट्स का क्वालिटी अच्छा होएगा, कंपनी अच्छा करेगा, तुम्हारा पगार बढ़ेगा. Second, in case of this also, workers will have to be trained how to maintain the machines, how to run the machine. So both of these programs के लिए एक requirement है शायद workers का training. Okay, I'm just trying to be finding out the similarity. So therefore, workers will have to be trained in both the departments, in both the programs. Unless workers cooperate in this, in these, it is not possible to achieve results. Last point बोल के I'll finish it off. Obviously दोनों के अंदर ना top management has to involve itself in implementing these programs. These cannot be implemented just like that, क्योंकि इसके लिए एक तो बहुत ज़्यादा वो प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है कि मशीन्स को कैसे मेंटेन करें, बहुत ज़्यादा वो खर्चे की भी ज़रूरत पड़ती है. चाहे TQM हुआ, कंपनी नीड्स टू बी इन्वेस्टिंग ऑन अप्रेजल कॉस्ट, प्रिवेंशन कॉस्ट. हियर कंपनी विल हैव टू बी ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस. फिर ऑटोनॉमस मेंटेनेंस अगर आ जाएगा, वर्कर्स विल हैव टू बी ट्रेन्ड फॉर दैट. सो कोऑपरेशन ऑफ टॉप मैनेजमेंट विल बी रिक्वायर्ड. तो यहाँ पे यू ऑल कैन राइट डाउन कोऑपरेशन ऑफ टॉप मैनेजमेंट will be required to implement these programs. ये तुम्हारा पार्ट 2 ऑफ द आंसर था. ठीक है, चलिए गाइस, सो वील स्टार्ट अवे विद द थिंग्स. अपना जो टीपीएम का जो इंट्रोडक्शन था प्लस अपना कैलकुलेशन ऑफ ओईई दैट वाज डन इन द लास्ट लेक्चर. सो टीपीएम इज स्टैंडिंग फॉर टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस. अपना एम जो है वो एक ही है, एंड दैट पर्टिकुलर एम इज लेट्स ट्राई टू मेक द मशीन्स, let's try to maintain the machines in such a way so that they give us a performance that we all had thought of. So for that, what we got to be doing? We got to be doing preventive maintenance. Instead of breakdown maintenance, we got to be doing preventive maintenance. So preventive maintenance matlab at regular intervals, try to have the checkups of the machine, try to have the greasing, oiling up and so on. So therefore, like, there are no unexpected breakdowns for us. So therefore, our aim is one, basically we don't want to be having any kind of downtimes. We don't want that suddenly the machine will break down up and so on. Now, after all these things also, it might happen that कि machine कभी ना कभी खराब हो जाए, लेकिन obviously उसके chances थोड़े से कम है. So in beginning, we all had written all the notes जो अपने को शायद next question के अंदर काम में भी आ जाएंगे. लेकिन ये वाला जो question है is only about one particular thing. And what is that? How much you should spend on preventive maintenance. Okay, if you'll be spending more on preventive maintenance, automatically you'll be spending less on breakdown maintenance. So breakdown maintenance मतलब machine खराब हो गया, उसके बाद आप उसको repair करवा रहे हो. That is nothing but your breakdown maintenance. So let's start off. This is fully a numerical question, no comments or anything. Okay, let's start question number 6, please. The budget estimates of a company using sophisticated high-speed machines based on normal working of 50,000 machine hours during the year 2020 are as follows. Okay. Sales 1 lakh units, 100 lakhs. Raw materials 20 lakhs. Direct wages 20 lakhs. Factory overheads variable 10 lakhs. Fixed 10 lakhs. S&D variable, S&D fixed, administration fixed. So in all, sales was 100 lakhs. Total cost was 80 lakhs. So profit in this case was supposed to be 20 lakhs. Okay. Since the demand for company's product is high, the possibility of increasing the production are explored by the budget committee. Now, what this line says that there is good demand of the product. So, in case you all can produce more, sales is not a problem because demand is very high. Okay, the technical director stated that maintenance has not been given due importance in the budget. Okay, and if preventive maintenance is introduced, the breakdown repair cost and the hours lost due to breakdown
can be reduced and consequently production can be increased. Okay, just read this line once more, please. Okay, so just do let me know if we are going to be having preventive maintenance from now onwards, then in that case there will be two benefits for us. Tell me, what are those two benefits? What are those two benefits in this line? Faster, guys, faster, faster. Breakdown reduces and production increases. The breakdown hours will be reducing. Just let me know one thing. If breakdown hours will reduce, how will it help our business? Dull people. Production can be increased. Those hours we are going to be using for production. So obviously the production will increase, sales will increase, contribution will increase, profit will increase. Okay. So that is one thing. Okay. Apart from that, obviously there will be one other advantage. My breakdown repair cost will start to be falling as such. Further, in support of this, he presented the following data showing how injection of more and more funds on preventive maintenance will bring down the breakdown repair cost and reduce or eliminate the stoppages due to breakdown. Okay, so therefore he is giving a certain table to us. Check what is this table. Proposed expenditure on preventive maintenance. Okay, so 19,200. Expenditure estimated to be incurred on breakdown repairs 1,92,000. Machine are saved nil. This could be say kind of current situation, okay, whereby whatever is happening currently, these guys are spending a very less amount on the preventive maintenance. तो ऑब्वियसली मशीन शायद बहुत ज्यादा खराब होता होगा. सो देयरफॉर जब मशीन खराब होता है उसके लिए we think that we are going to be incurring 1,92,000 and machine are saved are nil. Okay, if you are going to be spending 38,400 on preventive maintenance, okay, then in that case the breakdown repair cost will be falling down to this much. Machine hours in this case will be saved to the extent of 800. Same way, this thing I think you all will understand. The moment we are going to be increasing this particular thing will be falling, no? Correct, no? Okay, again. Using the differential cost and contribution concept, advise the management up to what level breakdown hours can be reduced to increase the production and maximize the profit of the company consistent with minimum cost. Okay. So what these guys are saying, like, that advise the management up to what level breakdown hours can be reduced to increase the production and maximize the profit of the company consistent with minimum cost. They're asking you that, at what level, okay, of preventive maintenance it will be most beneficial for us. Okay, you all had one chapter in CA Inter that you all might not remember called as receivables management. You all remember that chapter? At least the name you all remember? Like, the thing was that how much credit period we all should give to the customer. So whenever we try to increase the credit period up and so on, then sales will start to increase, contribution will increase, but then the interest that I'm going to be losing will also be increasing, bad debts will also be increasing up and so on. Now I don't want you all to remember that particular chapter, but जो भी आप लोग वहां पे आपका सॉल्विंग पैटर्न था, सेम पैटर्न आई एम ट्राइंग टू बी अप्लाइंग ओवर हियर. ओके, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी थिंकिंग कि मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है. ओके, लेट्स स्टार्ट टू बी डूइंग इट. तो लिखो जरा प्लीज. Evaluation of the options evaluation of the options for preventive maintenance. एक सेकेंड ना. हाँ, तो मशीन आर सेव करंटली इट इज नील. प्रपोज्ड के अंदर एक 800 है, 1600 है, 2400 है, 3200 है, 4000 है. कॉलम्स बनाने का होएगा तो अप्रोक्सीमेटली हाफ साइड से थोड़ा सा ज्यादा या हाफ साइड विल ऑल्सो बी ओके ओनली आई थिंक.
ये हो गया बेटा? Yes, sir. चलो सुनो मेरी बात. अभी what I'm going to be doing ना, ध्यान से सुनना, whatever is my intention. My intention is very simple. I will try to compare all the options with the current option. Okay. When I'm going to be doing that, my next line is going to be looking very stupid, but we are still going to be doing that. So as compared to the current situation, how many machine hours are saved? Extra machine hours saved. Compare everything with the first option. So obviously first option is nil, no? So therefore this as it is will be remaining like that only. We are comparing everything with the first option. Acha, listen. Extra machine hours to be saved. Now, just one answer I require from you all, and then I will try to solve the entire question by myself only. Okay. Tell me one thing. If you are going to be saving 800 hours, how much extra contribution will I get? Because fixed cost in any case will remain fixed only. So if hours I get extra, I'll be able to produce more, I'll be able to sell more, I'll be able to get contribution more. So therefore, just one thing that I want from you all is that if 800 hours are available extra, how much extra contribution will I make? See this table over there and start to be computing. Okay, you will require this data. You might, no, you only require this particular data. You will think yourself. I give you 1 minute. How much? 50. 800. 800 आवर्स से टोटल कंट्रीब्यूशन तो 50 रुपीज का आएगा बेटा. ये लैक्स के अंदर है प्लीज. पर यूनिट मेरे को एग्जैक्ट बोल तो 50 पर यूनिट इज रॉन्ग. हाँ 45 पर यूनिट. सुनो, बाकी लोग निकालने का करो ट्राई, लेकिन मैंने जो तुमको बोला तुम लोग मेरे को उसका आंसर नहीं दे रहे. तुम लोग कुछ भी आंसर देते हैं. मैं तुमको क्या पूछा? 72. हाँ 800 आवर्स एक्स्ट्रा मिलेगा तो कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा? गिव रिप्लाई टू द थिंग्स दैट आई एम आस्किंग प्लीज. सुनो, अभी तुम लोगों को ये वाला स्टेटमेंट देख के एक चीज को पता चला, एवरी यूनिट रिक्वायर्स 0.5 आवर्स. Yes, sir. क्योंकि यहां पे ये चीज वो लिखा हुआ था दैट बाय वर्किंग फॉर 50,000 मशीन आवर्स वी कैन बी प्रोड्यूसिंग 1 लाख यूनिट्स. ओके, सो देयरफॉर इन दिस पर्टिकुलर केस एवरी यूनिट विल रिक्वायर 0.5 आवर्स. So if I get 800 hours extra, I'll be able to produce how many units extra? 1600. And then you can try to find out contribution per unit. Now that is whatever IC has done, all fully correct. But I don't want to be doing that. I'll not copy them. I'll do the easier way out. What is the easier way out? Boss, these are extra machine hours saved. You want to be finding out extra contribution, no? So you can directly multiply by into contribution per machine hour. You'll be able to get extra contribution directly. I want to be doing like that only. Now, how will you get contribution per machine hour? Just pick up your calci, we'll prepare the working note towards the end. Okay. So, contribution is sales minus variable cost. So, 100 minus, obviously this will be variable, this will be variable. So minus 20, minus 20, minus 10, minus 5. So therefore this will become 45 lakhs. Okay. 45 lakhs divided by 50,000, contribution per machine hour will be 90 rupees. Is that all okay? Okay. तो यहाँ पे everywhere you all can write down 90. 90 का नोट हम लोग थोड़ी देर में डाल देगा.
Acha. I'm calling this as Roman number 1. This is my benefit as compared to the current situation. Okay. Now there is one other benefit also. At least name me that particular benefit. If I'm going to be incurring more on preventive maintenance, I get one other benefit apart from the extra contribution. What is that other benefit? Less breakdown hours. Less breakdown hours. Okay. Or I'll say in terms of cost. Okay. Less breakdown costs. Okay. So first thing I'm writing, what is going to be the cost as such? So therefore breakdown repair cost. One lakh 92,000, 153,600, 115,200, 76,800, 57,600, and this will be nil. Acha. Now, obviously it is falling no. I want to be finding out what will be my incremental benefit. So, therefore, you all write down saving in cost. Roman number 2, this is again benefit for us. So, please compare everything with the current situation to find out the benefit. So, 1,92,000 minus 153,600, 38,400. 76,800, 115,200. Compare everything with the first one, please. So this figure minus this particular figure gives you this particular figure. 1,92,000 minus 57,600, 134,400. And this is 1,92,000. This itself is your this part answer. This is your benefit. But obviously one thing, to achieve all these things, to get this Roman number 1 and Roman number 2 ka benefit, obviously there is one cost also. What is that particular cost? You incur more on preventive maintenance. So therefore, write down preventive maintenance cost. So that is 19,200. 38,400, 76,800, 153,600, 307,200, 614,400. So this is, now again I am comparing everything with the first one, extra cost. Roman number 3. So this is 19,200, 57,600, 134,400, 2,88,000, 595,200. My evaluation is altogether done. So everything is over. Just I am trying to be now finding out the net benefit. Okay, so therefore net benefit. Now Roman number 1 in this case is my benefit. So I am adding it. Roman number 2 is my benefit. I am adding it. Roman number 3 is my extra cost. I am subtracting it. Okay, just find out the net benefit, please. Okay, based upon that, we will be writing the conclusion over here. I'll require 2 lines for it. And then I'm making that working note till that time. Please, you all finish off the work, please.
calculation of contribution per machine hour. मेरे को बोल देना 1 2 3 4 5. You all do not write down this, but whichever figure is the highest, just to let me know. Which is the highest figure? I think the last one is a loss one, right? The third wala, and that figure is how much? 196,800. So in 196,800 you're getting highest profit, and there you are spending this much on preventive maintenance. So that is what I'm going to be writing over here. So company should spend rupees 153,600 on preventive maintenance. Once it is done, just to let me know. Done, beta? Okay. Working note 1 is also done. ठीक है, चलो सुनो. Now, अपना question number 7 पे आ जाओ. This is supposed to be a case study question,
But most of the things that you will require for this kind of a case study now, we all had written the summarized version of that on the first day itself, okay, whatever notes that you all had written. So please do ensure one thing, that those notes are there with you, please, okay. In the beginning we all had written those particular notes, okay. So let's start now. पढ़ो जरा please. Super Refineries Limited is a leading oil refining company operating in India. The company has 3 plants, one each situated in north, south and west. The company has a refining capacity of 30 million barrels. The company is currently enjoying a 40% share in the domestic market. Okay. So it's a oil refining company, something like your Reliance Petro or something. Okay. So they have 3 plants, one in north, south and west of India. Their capacity is this much. Okay. And they have 40% share in the domestic market. The plants run all the 365 days in the year and operate at 100% of the capacity. Okay. The company does not have any maintenance schedule. Okay. Does not have any maintenance schedule in place for its plant and machinery. Any repair or requirement of the plant is carried out on ad hoc basis. Okay. ये वाला लाइन एक बार जरा वो फिर से पढ़ना प्लीज, अच्छे तरीके से पढ़ना तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा. देखो वो लोग क्या बोलते हैं, वी डू नॉट हैव एनी मेंटेनेंस शेड्यूल ओके इन प्लेस फॉर इट्स प्लांट एंड मशीनरी ओके एंड एनी रिपेयर और रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट इज डन ऑन अ एड हॉक बेसिस. मतलब जब मशीन खराब होता है देन इन दैट केस वी ऑल ट्राई टू बी रिपेयरिंग इट. ठीक है. The company has implemented total quality management system to ensure that company rolls out top quality products. So therefore we already have TQM in place. That was our last chapter. The company did not receive any complaints from its customers regarding the poor quality of the product or products not meeting the specifications. So quality of the products is top notch. We have not got any complaints till now. But now read. The entire production team is quite excited with the superior quality of the products. However, in the last 3 months, around 30% of the dispatches to the customers was delayed. This comes at a time when entire plant had to be shut down for maintenance activity due to breakdown in the machineries for a week. Okay. Now, what these guys are saying, however, in the last 3 months, around 30% of the dispatches to the customers was delayed. Now, why did this thing happen? Those guys are saying in the next line. This comes at a time when the entire plant had to be shut down for maintenance activity due to breakdown in the machinery for a week. Now, obviously try to relate these events. What happened was that you do not have any maintenance plan or preventive maintenance. Okay, so we don't have that. Machine खराब हुआ, then in that case we will repair it. इस बार क्या हुआ कि for a week machine खराब हो गया. Obviously देखो सम के ना शुरू में यहाँ पे ये चीज वो लिखा हुआ है that company runs for all the 365 days in a year. Okay, so therefore plants run on all 365 days. बेटा plants को इतना ज्यादा यूज करोगे कभी ना कभी तो खराब होएगा, और अगर कोई प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का शेड्यूल वो नहीं है तो ऑब्वियसली जब खराब होएगा इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू ऑल. सो देयरफॉर दैट इज व्हाटएवर हैज हैपेंड आल्सो. फॉर अ वीक द मशीन्स वर ऑल गॉन फॉर अ टॉस. तो उस वीक के अंदर जो प्रोडक्शन होने वाला था दैट पर्टिकुलर प्रोडक्शन डिड नॉट हैपन. इफ इट डिड नॉट हैपन देन ऑब्वियसली जब भी मशीन ठीक हो गया वी ट्राई टू प्रोड्यूस एंड ट्राई टू बी सेंडिंग इट. लेकिन ऑब्वियसली ऑर्डर्स डिले तो हो ही गया ना, क्योंकि एक हफ्ते के ना कुछ प्रोडक्शन ही नहीं हुआ. आगे जरा देखो, द कंपनी ऑल्सो विटनेस 20% रिजेक्शन ऑफ देयर फाइनल प्रोडक्ट्स. अगेन आई ट्राई टू बी थिंकिंग दैट दिस थिंग कुड बी रिलेटेड टू द प्रीवियस पार्ट ऑल्सो, बिकॉज अभी क्या हुआ कि अपना मशीन से एक हफ्ते के लिए खराब हो गया. ऑब्वियसली वी विल ऑल्सो बी गेटिंग टेंस, यार मशीन कभी ठीक होएगा. जब भी मशीन ठीक हुआ अपन लोग फटाफट प्रोड्यूस करने के लिए इट माइट हैव हैपेंड दैट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट हैज स्टार्टेड टू गॉन फॉर अ टॉस. क्योंकि हमारे सारे के सारे जो टीक्यूएम के प्रोसीजर्स हैं वो तो इन प्लेस हैं, लेकिन अगर मशीन से खराब हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इन दैट पर्टिकुलर केस एक बार अगर मशीन ठीक भी हो जाएगा we'll have to try to rush the things. Okay, due to that the quality might go for a toss. The customers claim that the products did not meet the specification agreed by them with the company. The director of refineries is worried about the worsening situation of production at the plants. Now आगे जरा देखना. Another concern for the director is increase in the number of accidents and loss of productive time due to this.
ऑल दीज थिंग्स ना वो लोग आपको केस स्टडी के अंदर अगर कोई मॉडल यूज करने वाला होएगा ना, वो लोग तुमको हिंट देता जाएगा कि दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस इज अ प्रॉब्लम। यू हैव टू ट्राई टू थिंक दैट विच थिंग्स यू हैव लर्नड इन योर सिलेबस, try to address that particular issue. So therefore those guys are saying like there is another concern कि यहाँ पे ना due to machines वगैरह lot of accidents are happening और उसकी वजह से productive time अपना lose हो रहा है, ठीक है। The chairman of the companies convened an urgent meeting of the board of directors to understand the impact and the reasons of the situation at the production plants. Okay. तो उसने मीटिंग बुलाया। A key issue highlighted by plant supervisor is that, अभी ये ध्यान से पढ़ना, is that शेड्यूल्ड मेंटेनेंस एक्टिविटी फॉर द प्लांट्स वाज नेवर कैरिड आउट। तो हम लोगों ने कभी यहां पे मेंटेनेंस वगैरह वो करवाया ही नहीं आज तक। शेड्यूल्ड मेंटेनेंस मतलब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। वी ट्राई टू शेड्यूल इन एडवांस, लाइक मशीन को हम लोग ग्रीस करेंगे, ऑयल करेंगे, ऑल दोस थिंग्स। नाउ व्हाई वाज दैट थिंग डन? मतलब हम लोगों ने मेंटेन क्यों नहीं करवाया? द अंडरलाइंग अजम्पशन फॉर नॉट कैरिंग आउट सच मेंटेनेंस एक्टिविटी वाज, सिंस द प्लांट इज रनिंग स्मूथली there is no requirement of preventive maintenance activity। तो उन लोगों का assumption क्या था? भाई अगर मशीन ठीक चल रहा है तो सब बराबर ही है, ओके सब बराबर ही है, तो मशीन का मेंटेनेंस वगैरह क्यों करवाने का? Such activities cost a lot in terms of money and also causes loss of productive time which could otherwise be used for production। तुमको ये लाइन का मतलब वो समझ में आया? मेरे को बोलना एक बार, yes or no। वो लोग क्या बोलता है इन दिस पर्टिकुलर केस ना कि ये सब मेंटेनेंस करवाने के लिए ना बहुत ज्यादा पैसा जाता है, ऑब्वियसली आवर्स भी जाता है। दीज आवर्स कुड हैव बीन यूज्ड फॉर प्रोडक्शन एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो अपने को ये जो मेंटेनेंस जैसी वो फालतू चीजें ना वो अपन लोग वो करवाता ही नहीं। द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फंक्शनड इन सिलोज। सिलोज मतलब इन आइसोलेशन, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ऑफ द मशीन्स है ना, वो लोग का आपस के ना कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता। सपोज यहां पर मशीन खराब हो गया, वो लोग मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को फोन करता है, ओके, या फिर एक तो ऐसा हो सकता है कि फोन ही नहीं करता, दूसरा फोन करता है तो ये लोग तब वो आते नहीं है। तो ऑब्वियसली ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से लॉट ऑफ आवर्स विल गेट वेस्टेड, ठीक है। आगे देखो उन लोगों ने वो लिखा है, विद ऑलमोस्ट नो कोऑर्डिनेशन अमंग देमसेल्व्स the most critical part of the plans was not maintained for a very long time, ठीक है। The chairman called you after the meeting and asked you to help him to understand the current issue at the plant, ठीक है। We had total quality management in place at all our plants, ठीक है। I understand from the production director that TQM is working as intended. Why we are facing the breakdown problems in spite of having TQM in place, said the chairman। तो अपने को ये breakdown के जो problem आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं? The chairman has asked you to quickly prepare a note highlighting the following points. First, what could be the likely losses arising due to breakdown of machine due to non-maintenance? आप लोग अपना notes खोलो जो first day वो लिखा था। अच्छा, ऑब्वियसली इन दिस पर्टिकुलर केस उन लोगों ने यहां पर क्या बोला है? व्हाट कुड बी द लाइकली लॉसेस अराइजिंग ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ द मशीनरी ड्यू टू नॉन मेंटेनेंस। सुनो, उससे पहले नाउ बिफोर आई स्टार्ट दिस पर्टिकुलर थिंग, तुम लोग को शायद उतना समझ में आ गया रहेगा। मेरे को बोलो व्हाट इज देयर बिगेस्ट प्रॉब्लम उन लोग के यहां पर जो इतना ब्रेकडाउन्स वगैरह हो रहा है? व्हाट इज देयर बिगेस्ट प्रॉब्लम? बिकॉज वी विल स्टार्ट अवे विद दैट पर्टिकुलर थिंग ओनली। There is no scheduled maintenance or no preventive maintenance. Now obviously your machines are helping you all to produce. You have to be ensuring that in this particular case the machines are kept in a proper state. If that particular thing is not done, automatically it will hamper you all to a great extent here. Okay, so therefore the problem that the company is facing, there are a lot of breakdowns that are happening. Now due to breakdown, hours are lost. Okay, so orders are getting delayed. Apart from that, in this case orders are getting delayed. The quality of the products is also suffering because obviously you got to be producing more. Agar suppose my plant was running for all the 365 days, okay, I had a plan in mind, 365 days में यहाँ पे plant वगैरह को चलाएगा तो मैं orders भी उसी के हिसाब से लूंगा। तो I have taken the orders for all the 365 days, so plant has to be running for 365 days। अगर बीच में एक हफ्ते के लिए मशीन खराब हो जाता है, orders will start to get piled on। उसके बाद एक तो ऑर्डर डिले होएगा और उसके बाद जल्दी जल्दी प्रोड्यूस करने के चक्कर में और क्वालिटी माइट ऑल्सो बी फॉलिंग। सो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर केस यू आर नॉट हैविंग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और शेड्यूल्ड मेंटेनेंस, ओके, इन
your system, and due to that all these things are happening. Now part first, what could be the likely losses arising due to breakdown of machinery due to non maintenance? तुम लोगों ने फर्स्ट डे ये वाला आंसर वो लिखा था. Obviously likely losses, first of all hours will be lost which could have been used for production. उसके बाद workers भी जो है वो idle time हो जाएगा, अपने को उन लोगों को पे करना पड़ेगा. Apart from that, in this particular case, जब भी machine खराब होएगा, breakdown repair cost will be very high. Apart from that, you'll have to constantly reset up the machines, and then in that case, there could be quality issues also. You all had written these particular points, no? I guess on the first day. So that is your first particular thing. Second, what kind of preventive maintenance program, what kind of maintenance program could address the issue being faced by the company? यहाँ पे you should start away by writing कि TPM क्या होता है. So your TPM is a program which the company start to implement, whereby in this case we try to be thinking whenever we are planning for production also, we will try to plan in such a way that there is time for preventive maintenance. We did a study and we found out that machines should be maintained, say every week. So every week in my budgets itself, I try to be thinking that say every Tuesday from 2 to 3 machines will be shut down. In this case, for the preventive maintenance, we'll try to grease them, oil them up and so on. Or in this case, if you all think, sir, we don't want to be using our production hours, okay, for all such nonsense things, okay, you can try to have your preventive maintenance after the factory hours. But whatever happens, in this case, you should try to have a preventive maintenance schedule. This complete schedule whereby we try to think, let's try to maintain the machines in such a way that machines give us a performance that was intended, is called as total productive maintenance. Okay, further. Explain the key features of this kind of a program. I told you the other particular day, instead of the preventive maintenance, instead of the breakdown maintenance, you try to have your preventive maintenance. In this case, we try to train the workers also. Okay, so therefore, small things, those guys can repair themselves, and the major things can be done by the maintenance department. That is called as a funda of autonomous maintenance. So all those things also you all had written only. Compare the program identified above and TQM. The other day also I told this particular thing that TQM का focus एक चीज रहता है, and that is nothing but in this case try to have the products which are of the best quality. लेकिन TPM is just a small part of that tries to tell you that at least maintain the machines which help you in producing that best quality in a proper way so that there are no unscheduled stops. Okay, so in a way TPM is part of your TQM ka program. So TQM is a very big thing. Okay, TPM is a small part of that revolves around the machines. That machine should be able to give the performance that was intended. Again, what are the types of maintenance practices that the company can implement? उस दिन जरा देखो तुम लोगों ने 5 types of maintenance वो लिखा था, जरा वो देखना एक बार. First thing in this case was breakdown maintenance. मशीन खराब हो गया, उसके बाद आप रिपेयर करो. But such kind of expenses are not good for a company. Okay, so obviously the workers will be sitting idle, the losses will start to happen up and so on. So instead of the breakdown maintenance, you try to have preventive maintenance. Maintain the machines in advance only, so therefore all those particular problems will not happen. That's second. Third, in this case, autonomous maintenance. You train the workers so that all smaller things can be repaired by them only. For major things, we still have in this case your maintenance department, okay, who can come and try to repair all the major problems. Fourth, in this particular case, zara yaad karo what you all have done. You have done corrective maintenance, okay, and then you have maintenance prevention. Corrective maintenance matlab try to have the machines which are easier to clean and easier to maintain. I gave you the examples the other day. Apart from that, in this case, maintenance prevention. This is the highest level of engineering that you all can be going, whereby we try to purchase the machine जिसके ना maintenance की जरूरत ना पड़े. Okay. So these are all the 5 points that these guys had asked. Okay. Towards the end, अगर conclusion लिखने का मन हो, that you all should try to be writing in the case study. Companies should always recognize that plants cannot be operating for 365 days. There has to be preventive maintenance schedule. Preventive maintenance is a value-added activity and not a non-value-added activity. If you will maintain the machines in a proper way, they will start to give you the results as intended. It might happen that after this also there are breakdowns, okay, but those breakdowns will be curtailed to a great extent. Okay, so that is whatever this entire thing was.